दुनिया टुडे में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। रेमंड डेविस के मामले पर बात हो रही है और ऐसे वक्त में जबकि सेनेटर जॉन कैरी पाकिस्तान आए हैं और अमेरिका का पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं? जफर हिलाली साबिक सफारतकार मेरे साथ हैं। जफर हिलाली साहब, इससे पहले बात हो रही थी जो सियासी जमातें हैं उनके तर्ज अमल के हवाले से भी हमने कुछ बात की कि उनका जो रवैया है क्या हकीकत पसंदाना है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो हमारा हम माने या ना माने मुफाद जुड़ा है, दहशत गर्दी की जंग है, इमदाद का मामला है और भी बहुत से मामले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पहले चीज तो मैं कहता हूं कि काफी सारे ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे अब फैसला ये हो सकता है कि उसको अमेरिकन कस्टडी में हम रिलीज करेंगे, मगर साथ साथ ये शर्त लगाएंगे कि वो मुल्क ना छोड़े तक उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। उसके अलावा हम ये भी उसे कह सकते हैं कि देखिए उसको अमेरिकन कस्टडी में हम रिलीज करें, अगेन नॉट लीव द कंट्री, मगर हम उस वक्त बैठ के विद द हेल्प ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स एंड एडवाइस ये डिटरमिन करेंगे कि किसका पोजीशन ज्यादा इज अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन। तीसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि वो फिर उसको रिलीज करके उनके कस्टडी में हम ये कहें कि भाई हम इस कोर्ट का जो फैसला है, जो भी फैसला होगा, गवर्नमेंट एक एश्योरेंस देगी कि हम उसको पार्डन कर सकते हैं फैसले के बाद। और ये है कि हम कह सकते हैं डे टू डे हियरिंग्स हो और जल्दी से फैसला हो, और फिर उसके बाद किसास का भी मामला जैसे है, अगर फैसला उसके खिलाफ गया तो जैसे आपको पता है किसास भी हो सकता है। अच्छा जफर हिलाली साहब मेरे साथ रहिएगा। जॉन कैरी के हवाले से हमने अभी बात की थी और जॉन कैरी जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी करनी है और अभी जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं बराह रास्त के जॉन कैरी जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। रेमंड डेविस के मामले को लेकर ही सदर ओबामा के साथ भी उनकी तफसीली मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो है वो जॉन कैरी को जो है पाकिस्तान भिजवाया गया है। जफर हिलाली साहब मैं जरा आपसे तो कुछ बात करना चाहता हूँ जॉन कैरी वाले मामले पर। जॉन कैरी का इस तरह से पाकिस्तान में आना अब यकीनन बहुत ही कदावर शख्सियत है। अगर हम अमेरिकी कांग्रेस के हवाले से बात करें, अमेरिकन पॉलिटिक्स का जिक्र करें, ये अमेरिका के लिए मामला किस कदर हसास हो गया है? क्योंकि अमेरिका जो सारी आपने ऑप्शन दी, क्या अमेरिका अभी जो सिफारती इस्तिस्ना वाला मामला है उससे बाहर निकल के सोच सकता है? देखिए बात असल ये है कि उनका पोजीशन वियना कन्वेंशन में इसलिए है कि मेरे अपने ख्याल में, और ये मेरा गेस है, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, मैं समझता हूं कि हर मुल्क में जब अमेरिकन ऑपरेटिव्स काम करते हैं अंडर कवर, माने या एम्बेसी में या आउट ऑफ द एम्बेसी में, वो ज्यादातर जैसे ईरान के साथ उन्होंने किया था शाह के जमाने में, वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अगर इन्होंने ऐसी कुछ चीज की विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, उस लॉ पे उन पे अमल नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये एक अमूमन एक खुफिया एग्रीमेंट होता है जो ज्यादातर ये पब्लिश नहीं होता, दोनों मुल्कों का ये एक अंडरस्टैंडिंग होता है। अब इस वक्त ये जो हुआ है मेरे ख्याल में इतना जल्दी हुआ है और इतना पुअरली और बैडली हैंडल्ड हुआ है कि दोनों मुल्कों ने जल्द से जल्द एक स्टैंड लेना पड़ा। उस स्टैंड से अब दोनों वापस निकलने के लिए उनको बड़ा मुश्किल है हो रहा है, पब्लिक स्टांस जो लिया है। Senator Kerry, this is Mueed P03. I'm Director of World Affairs with Dunya Television, and first let me extend you a very warm welcome to you in Lahore in Pakistan. And we're also very glad looking at you that you're the chairman of the Senate Foreign Relations Committee. We know you have been presidential candidate, and we also know you as an architect of the Kerry. You're one of the presidents. I'm sorry, you're one of the presidential candidates, and you have been one of the principal architects of the Kerry-Lugar bill. We know you as a friend of Pakistan. So we are glad that this issue, the tensions in the last 15 days have been taken up, and we understand that you had a discussion or a chat with President before you came here. So it has been taken up, these tensions have been taken up at the highest possible level, and you coming here represents an engagement at a very high level. So we're very glad on this. But I have a question for you, sir, with your background in mind, specifically tailored for you, which is on every Pakistani mind. While I was driving here from Islamabad to see you, that you have been on record, like Secretary Clinton, believing in the strategic nature of the Pakistan-US relationship, the enduring partnership, the long-term relationship. You have been on record, just like Joe Biden, the Vice President, saying that we want to move away from a tactical, transactional relationship to a long-term relationship. And here we have seen in the last 15 days, and whatever happened between Washington and Islamabad, that one incident, however unfortunate it might have been, sir, one incident which at best is a self-defense and at worst is in fact a murder,
That one incident has rocked the relationship between Washington and Islamabad to such an extent that we believe that we have also lost our foreign minister in the process. I mean, it has all been, so how come? I mean, if this is the level of disequilibrium in this relationship, if how fragile this relationship is, what can we talk of the future, sir? I mean, this is my question to you, and this is on every Pakistani mind, sir. Thank you. Well, it's a legitimate question, but you know as well as I do, and the people of Pakistan know this, that sometimes politics gets in the way of common sense or even things that are reasonable. I think it's very important for us to step back. That's why I'm here. We have a very powerful trust in the law. I think you know that. And this incident is a very tragic, very unfortunate incident. Nothing that we say or do about it is an expression of any kind of arrogance on our part. There is no arrogance here. In fact, I am at liberty to tell you today that it is customary in an incident like this for our government to conduct a criminal investigation. That's our law. And I can give you the full assurance of our government today that that will take place. So there is no such thing as a suggestion that something is out of the law or that America thinks somehow we're not subject to it. What we do believe is that Pakistan and the United States and hundreds of other countries, not hundreds, but 100, almost 200 other countries, signed the Vienna Conventions of 1961, Article 37, which creates diplomatic immunity. We don't create it. You don't create it. The global community has created it. It doesn't mean that there's no responsibility. It doesn't mean it's, as I said, acts of arrogance can be committed and nobody is responsible, which is why I'm telling you today our Department of Justice will conduct a criminal investigation. But that doesn't mean the law of immunity is not something we all have to respect, like it or not. And every country in the world faces this kind of question. So my point to you is simply, let's not allow this genuinely unfortunate incident, no matter what we or you or I think of it personally. We have to try to proceed forward to work at the things that make a huge difference. And that is the question of the people of Pakistan having greater stability, of our ability to be able to work together on rebuilding from the floods, creating the kind of broad atmosphere where the country understands what our intentions are, and working together on health issues, energy issues. There's a huge energy deficit. The reconstruction opportunity zones, which we want to take up in the Congress and try to pass and change the economic relationship. These are big, much bigger issues. And I know that nothing seems bigger to the family of somebody that they've just lost than that loss. We respect that, and that's why I express the sorrow of our country about that. And I think there are ways for us to work with your leadership to try to deal with those things in quiet and private. सेनेटर जॉन कैरी बात कर रहे थे लाहौर में सहाफ़ियों से, और उन्होंने बार बार सिफारत इस्तिस्ना का हवाला दिया, और सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करते वक्त उन्होंने एक बात जिसको बहुत ही एम्फेसिस के साथ कहा, वो ये थी कि ये जो कानून है सिफारत इस्तिस्ना के हवाले से, ये पाकिस्तान का या अमेरिका का कानून नहीं, बल्कि तमाम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने वियना कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं, और उन दस्तखतों के बाद सूरत हाल और अमेरिका का नुक्ता नज़र, उनका यह कहना था कि इस सारे मामले को लेकर बहुत हद तक वाज़ेह है, और वो नुक्ता नज़र ये है कि रेमंड डेविस को जो है सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, वो डिप्लोमेट है, और पाकिस्तान को जो है वो इन्हीं तमाम चीज़ों को सामने रखकर देखना होगा। अब एक वाक़या है जो कि दोनों ममालिक को इस नहज पर ले आया है, और एक जुर्म हुआ जिसके बाद अब दोनों ममालिक के मफादात के हवाले से भी बहस छिड़ी है, और अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि क्या ये शख्स और इसका जुर्म वाकई ही इन मफादात से बढ़कर है।
دنیا ٹوڈے سے اتنا ہی. رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.